हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। आपको टाइम पता लग जाता है ना जिस वक्त मैं क्लास लगा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग है कि गुड आफ्टरनून है कि गुड इवनिंग है। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स रिटन ऑन द बोर्ड टुडे। इट इज प्राइमरली बिकॉज there was a small issue here when I'm writing some theoretical part. I come in between, so I've written it earlier, जो ज़्यादा theory का part है। Rocket propulsion is the topic of the day. Rocket propulsion. Rocket propulsion is based on the law of conservation of linear momentum. It's just like the recoiling of a gun. If you have a gun, you are supposed to keep it beyond your shoulder. If you just keep it here, as the shot is fired, it is going to recoil and it could hurt your shoulder. सवाल भी भेजा था मैंने. Because the initial momentum of the gun and the bullet is zero. According to the law of conservation of linear momentum, the final momentum must also be zero. Thus, if a bullet is fired with a certain speed or momentum, the gun will recoil with an equal momentum. Similarly, just elaborate this situation to a rocket. Rocket propulsion. Rocket भी propel होता है. It is based on the law of conservation of linear momentum. Right? The initial momentum of the rocket on its launching pad is zero. Now just remember that the rocket has a lot of fuel, and the total mass of the rocket includes the mass of the fuel and the entire structure. The initial momentum is zero. It's just like a gun bullet system. Exhaust gases are expelled from the rear of the rocket at a large speed. Exhaust gases are expelled from the rear of the rocket at a large speed. थोड़ा सा dm mass speed u के साथ, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ इजेक्ट हो गया. रॉकेट recoil करेगा to conserve momentum. The rocket recoils to conserve momentum. We are neglecting any kind of external forces, and the final momentum of the rocket and the exhaust gases is also zero. This means that the momentum with which the exhaust gases are expelled, the recoiling momentum of the rocket is the same but opposite in direction. That is how the final momentum would also be zero. In actual practice, we have gravitational forces and frictional forces. In actual practice, we have gravitational forces and frictional forces. And due to these, the climb of the rocket will be less than had it been projected in free space. For simplicity, we consider the rocket moving in outer space where no external force acts on it. So we will assume that the rocket is moving in outer space. किसी एक वक्त पे रॉकेट का मास है m0 और उसकी स्पीड है v0, राइट? क्योंकि उसका मास रिड्यूस होता जाता है. Why? यार काफी देर के बाद काफी फ्यूल निकल चुका होगा और उसका मास होगा m. At some time, the mass of the rocket is at an instant t is m. Pictorial representation. This is the rocket. I'm very bad at drawing. This is the mass of the rocket, which includes a lot of fuel. The initial mass was m0. बड़ी देर बाद उसका मास कितना हो गया? m. कैसे हुआ कि फ्यूल इजेक्ट हो ही जा रहा है थोड़ा और रॉकेट की स्पीड थोड़ी बढ़ी जा रही है. रिमेंबर, अगर फ्यूल इजेक्ट नहीं होगा तो रॉकेट आउटर स्पेस में उतनी स्पीड के साथ ही चलता रहेगा. 10. फिर हमने कहा कि रॉकेट की एक इंस्टेंट पे मास है m और स्पीड है v. जा रहा था रॉकेट इन अ वेरी स्मॉल टाइम dt. This is at a time t, and this situation is at a time t plus dt. It means in a very small time dt, a small mass dm of the exhaust gases is expelled from the rear of the rocket with the speed u. The rocket was already moving, and
a small mass dm is expelled from the rocket with the speed u. As a result, the rocket will recoil. उसकी स्पीड इंक्रीज होगी dv. At a time t speed mass rocket का m था, स्पीड v थी. At a time t plus dt. आप बोलोगे मास कैसे m रह गया? यार m minus dm is very small. dm mass is expelled from the rocket in a very small time dt. पर इस तरह कर करके बहुत देर बाद मास का फर्क जरूर पड़ जाएगा, जैसे कि m नॉट से m आ गया. बट अब आई एम कंसिडरिंग अ वेरी स्मॉल टाइम dt. Over here you can write it as m minus dm, which I will write approximately equal to m. dm लिखा हुआ है. A small mass dm of the exhaust gases is expelled from the rear of the rocket with the speed u. तो रॉकेट की स्पीड v plus dv होगी. इसका मतलब कि dm मास इजेक्ट हुआ विद स्पीड u, उसने रॉकेट की स्पीड dv से इंक्रीज कर दी. दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर. m नॉट और v नॉट तो इनिशियल मास और इनिशियल वेलोसिटी थे कभी एक इंस्टेंट में. अब क्या सिचुएशन है? अब मास m है, स्पीड v. अब इसके बाद a small mass dm, mass of the fuel ejected in a small time dt, and u is the velocity of the exhaust gases with which they are expelled. dv is the increase in velocity in a small time dt. ये सारा कुछ ये वाला ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है यहां पे. ठीक है जी. Now, the change in momentum of the exhaust gases. Exhaust gases were relatively at rest with respect to the rocket. They were moving with the same speed as the rocket. एक जगह बनी होगी जहां फ्यूल पड़ा, रॉकेट भी जा रहा है विद स्पीड v, फ्यूल भी जा रहा है. Now, the change in momentum of the exhaust gases, u is the velocity of the exhaust gases relative to the rocket, which means that had the rocket been at rest, तो उसकी स्पीड u होती. वो relative velocity के सवाल भी किए थे रॉकेट में, याद है इन द चैप्टर ऑन relative velocity कि एग्जॉस्ट गैस तो नीचे को जा रही है और रॉकेट तो ऊपर को जा रहा है. विद रिस्पेक्ट टू एनीबॉडी ऑन द अर्थ, वेलोसिटी जो गैसेस है वो ऊपर को जा रही है क्योंकि रॉकेट के साथ जा रही है, पर एक्सपेल इस तरफ हो रही है. Anyway, change in momentum of the exhaust gases is u into dm minus 0. Change in momentum of the rocket, इस दौरान जब एग्जॉस्ट गैसेस एक्सपेल हुई तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? रॉकेट का मास हो गया कि m माइनस डी और स्पीड होगी v प्लस डी. पहले कितना था? m into v. m माइनस डी इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज m. वो टनों में है यार, वो कुछ केजीज में होगा. m into v प्लस dv माइनस mv. ये mv कट जाएगा और mdv रह जाएगा. So what I have done is, in a small time dt, we have calculated the change in momentum of the exhaust gases and the change in momentum of the rocket. अगला step बहुत ही interesting और important है. I am away from the screen at the moment simply because so that you can visualize it. According to the law of conservation of linear momentum, the one written in blue, m into dv, which is the change in momentum of the rocket, must be equal to u into dm, which is the change in momentum of the exhaust gases. यहां मैंने बड़ी शैतानी से एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दिया. नेगेटिव साइन shows that the rocket moves in a direction opposite to the exhaust gases. Right? ये वाला पोर्शन मैं आपको अभी आपके सामने डिराइव कर देता हूं, लिख देता हूं. I just forgot my tea. I will repeat the entire story, please. You can write it down in between also. I'll keep moving here and there. Boys and girls, rocket propulsion is based on the law of conservation of linear momentum. It works like a gun bullet system. यार वो थोड़ा है, वो थोड़ा elaborate. Basically, exhaust gases are fired from the rear of the rocket with a large velocity,
and the rocket will recoil. रॉकेट का मोमेंटम एग्जॉस्ट गैसेस के मोमेंटम के बराबर होगा, लेकिन स्पीड बहुत कम होगी क्योंकि रॉकेट का मास बहुत ज्यादा है। जो ये कुछ मैंने किया इन अ स्मॉल टाइम dt, ये बहुत बारी हुआ तो स्पीड उसकी चेंज होती रही। तो इनिशियल मास मैंने रखा m0, उस वक्त वेलोसिटी सी v0, थोड़ा मास इजेक्ट होता गया, स्पीड बढ़ती रही, और एक स्टेज ऐसी आई विच इज द इंस्टेंट t where the mass of the rocket is m, which is obviously less than m0, and the speed is v, which is obviously more than v0. m0 से m और स्पीड v0 से v जब हुई तो वो काफी देर बाद हुई, पर हुई कैसे? इन अ स्मॉल टाइम dt जैसे इंटरवल्स बहुत सारे हुए। एक इंटरवल मैं कंसीडर करता हूं, m is the mass of the rocket and v is the speed of the rocket at a time t. In a very small time dt, a small mass dm is expelled from the rear of the rocket with the speed u, and as a result the speed of the velocity of the rocket, which was initially v, becomes v plus dv. Actually ये कुछ बहुत बारी हुआ तो m0 से m आ गया और v से v0 चला गया। ये कुछ बहुत बारी हुआ क्या? I calculated the change in momentum of the exhaust gases. The exhaust gases were initially at rest with respect to the rocket. तो zero था momentum और u into dm, momentum of the exhaust gases. The momentum of the rocket, final minus initial कर दिया, m minus dm into v plus dv minus m into v, m dv आ गया. According to the law of conservation of linear momentum, the total momentum तो उतना ही होना चाहिए ना. The change in momentum of the exhaust gases equal to the change in momentum of the rocket. I hope I can rub it और आपने लिख लिया आएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो and you can write it at your convenience. I am going to rub it now. So basically we will start writing from udm is equal to minus m dv. udm is minus m dv. Actually, when you are in the class, sitting with me in the classroom, मैं आपको ये कुछ बोल के लिखवा देता हूँ, साथ साथ लिखते रहते हैं बच्चे. So we have ये कुछ मैं चलो पहले रब भी कर देता हूँ, so that you don't have to. I will write this one again. Now, as udm, as mdv is minus udm, dv is equal to minus u 1 by m dm. इंटीग्रेट. अब समझ आएगी बात. v0 से v इस तरह कर करके हुआ, इस तरह कर करके हुआ. This is minus u 1 by m dm from m0 to m. Integral of dv is v from v0 to v minus u natural log m from m0 to m. Remember, 1 by x dx was natural log x. V minus v0 equal to minus u log m minus log m0. Let me absorb the negative side and we have log m0 minus log m. Log के कुछ results होते हैं. Log m minus log n is log of m by n. V minus v0 is equal to u
नेचुरल लॉग एन लिखते हैं, एम नॉट ओवर एम और v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू नेचुरल लॉग एम नॉट बाय एम. Clearly, the increase in velocity of the rocket depends on number one, u, the velocity with which the exhaust gases are expelled. B, the ratio of the natural logarithm of the initial to the final mass of the rocket. Right? अगली चीज कैलकुलेट करनी है thrust on the rocket. As mdv is equal to minus u dm, therefore m into dv by dt equal to minus u into dm by dt. M dv by dt, this is force, which is the thrust of the rocket, minus u dm by dt. ये रिजल्ट मैंने आपको पहले भी करा दिया था, वो बैलून वाले सवाल. ये जो आर्टिकल है ना रॉकेट प्रोपल्शन वाला, ये ऐसे करके पेपर में आता है. ऐसे कुछ आ जाता है. अब कुछ शुरू हो गया जो डायरेक्टली आता है, पर मेनली फिर भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी है. अगर मेरे को पूछोगे एज एन एग्जामिनर, सर आप ये डालोगे? नहीं, मैं नहीं डालूंगा पूरा आर्टिकल. मेरे लिए रॉकेट प्रोपल्शन बस इतना की, ठीक है. इंस्टेड ऑफ पुटिंग 5 mark questions, I will put 5 1 mark questions. छोटा. कल आपको डाला ना. So please see, the rocket propulsion is based on the law of conservation of linear momentum. इसकी direct formula application है dm by dt, the rate at which the fuel is expelled. d by dt of m, it is the rate at which, and u is the numerical करोगे तो समझ आ जाएगा. कल मैंने एक असाइनमेंट बनाई थी आपके लिए, होपफुली आप लोगों ने कर ली होगी. ठीक है जी. ये आपका रॉकेट प्रोपल्शन खत्म हो गया. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद, आई एम जस्ट अराउंड 18 minutes into the lecture, please. I am going to start with a beautiful topic, friction. Please see that we are practically going to have lectures every day, and your work should also be complete every day. बहुत क्वेश्चन है फ्रिक्शन पे, बेतहाशा. बेसिकली तो NLM में है सारा कुछ, लॉ ऑफ मोशन ही है सारा कुछ. फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. देखिए फ्रिक्शन होती क्या है? द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले whenever there is a tendency of relative motion
actually a relative motion between two surfaces. बड़ी इंटरेस्टिंग है और मेरी बात गौर से सुनना. द अपोजिंग फोर्स मतलब फ्रिक्शन जो है वो बॉडी की मोशन को अपोज करती है. इट कम्स इनटू प्ले. कम्स इनटू प्ले का क्या मतलब है कि पैदा हो जाती है whenever there is a tendency of relative motion. ये क्या मतलब हुआ? और relative motion itself. If one surface is moving over another, there is definitely a frictional force between the two surfaces. पर अगर मेरे पास क्या क्लास में होता तो ज्यादा इंटरेस्टिंग था. लो जी, ये मेरे पास ग्लास, ठीक है. आई एम अप्लाइंग अ फोर्स. बिलीव मी, आई एम रियली अप्लाइंग अ फोर्स, बट देयर इज नो मोशन. According to Newton's laws, an application of a force should definitely move it, but there is no motion. Try to push your dining table. Heavy होता है ना काफी. इतना फोर्स लगाना कि वो चले ना. I know a 17-18-year-old boy or a girl is powerful and will be able to push it. इतने फोर्स लगाना कि वो ना मूव करे, पर टेंडेंसी तो थी रिलेटिव मोशन की. You were trying to move it. Suppose you apply a force of 5 newtons. ठीक है? It did not move. It means the force of friction coming into play is also 5 newtons. The body did not move. It means the net force is 0. You applied a force. You applied a force of 5 newtons. The body does not move. It means the force of friction is 5 newtons. आपने फोर्स इंक्रीज कर दी, 7 न्यूटन कर दी, बॉडी फिर भी नहीं चली. फ्रिक्शन भी 7 न्यूटन. इसीलिए कहते हैं ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इट मींस फ्रिक्शनल फोर्स विल कम इनटू प्ले. सपोज करो ये ग्लास और ये यहीं पड़ा है, राइट, पर मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाई. देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 है. अगर आपने कोई फोर्स नहीं अप्लाई की, फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 है. जितनी फोर्स अप्लाई करोगे, अगर बॉडी ना चली, जितनी आपने फोर्स अप्लाई की और बॉडी ना चली, इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स भी उतनी ही पैदा होगी. दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. राइट? लो जी, फिर रख दिया हमने इसको. ये आपने फोर्स 0 फोर्स अप्लाई की, 0 फ्रिक्शनल फोर्स है. 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, 2 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स है, बॉडी नहीं चली. 5 की कर दी, इंक्रीज की. अब डाइनिंग टेबल को पुश करके देख लेना, फ्रिक्शनल फोर्स 5 होगी. 6 कर दी, नहीं चला. 7 कर दी, नहीं चला. इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी उतनी ही पैदा हो रही है. दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कि बॉडी रेस्ट पे, हमने फोर्स अप्लाई की, बॉडी नहीं चली, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट पैदा हो गई. ये चल पड़ा. जस्ट बिफोर दिस इट वॉज कॉल्ड द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम, लिखवा दूंगा सारा कुछ, डोंट वरी, लिखवा दूंगा. इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कि किस हद तक स्टैटिक फ्रिक्शन पैदा हो सकती है. और वो पता कैसे चलेगी? आप फोर्स अप्लाई करते रहो. जब जस्ट चलने लगे, जितनी वो फ्रिक्शनल फोर्स थी, वो फोर्स मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, व्हिच इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन. एंड वंस द बॉडी कम्स इनटू प्ले,
फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। गाड़ी को धक्का लगाते हो ना, गाड़ी को धक्का लगाते हो, हाय शा, धक्का लगा, दैट्स इट, एंड वंस इट इज इन मोशन देयर इज फ्रिक्शन, बट दैट वैल्यू इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. Okay, let's compile all this, you know. The opposing force that comes into play whenever there is a tendency of relative motion or actually a relative motion between the two surfaces. The force of friction comes into play on the application of an external force. ये मेरे पास एक सरफेस है, ये इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ और ये P is the external force. और ये बिटवीन द टू सर्फेसेस होगी जी फ्रिक्शन फोर्स. ये इसका वेट है और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन. वी नो दैट R is equal to mg. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? On the application of, साथ साथ लिख सकते हो, समय तो आ चुका है. On the application of an applied force, on the application of an external force, if the body does not move, semicolon डाल लो. This means that an equal and opposite force of friction has come into play. Net force becomes zero and the body does not move. लैंग्वेज आप अपनी भी बना सकते हो. मेरा आप लास्ट ईयर का रजिस्टर देखोगे, थोड़ी लैंग्वेज और होगी. वो कंप्यूटराइज्ड लेक्चर थोड़ी है. इट इज जस्ट जो मेरे माइंड में आ जाता है मैं लिख देता हूँ. समझ आई हुई है बात की. आप भी बना. मतलब किसी ने ऐसे नहीं पूछना स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, पता होना चाहिए. ओरली भी पूछ सकता है कोई. So on the application of an external force, if the body does not move, this means that an equal and opposite force of friction is come into play. The net force becomes zero and the body does not move. This is called the force, the opposing force of static friction. स्टैटिक वर्ड इस करके है क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है. स्टैटिक है. स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग. क्या बात है. स्टैटिक फ्रिक्शन इज an self adjusting force. पता क्या मतलब है कि जितनी फोर्स आप अप्लाई करोगे स्टैटिक फ्रिक्शन उतनी ही हो जाएगी. दिमाग चल रहा है मुझे पता. अभी जवाब देता हूं. इसी पे कंसंट्रेट करना आपने. एनएलएम के तो आपके बहुत टेस्ट हुए. जिसका वीक है सारी असाइनमेंट्स और टेस्ट एक बार दोबारा रिवाइज कर लो आफ्टर यू डू योर कंसेप्ट्स. कंसेप्ट्स ही कंसेप्ट्स हैं एनएलएम में. स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. मतलब आप जितनी फोर्स अप्लाई करोगे उतनी स्टैटिक फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी, पर किसी हद तक पैदा होगी.
पर किसी हद तक की पैदा होगी सिर्फ। वो हद क्या है? वो हद will depend upon the nature of the two surfaces in contact. It will depend on the normal reaction between the two surfaces. It will depend upon the state of polish between the two surfaces and so on. So अब हम आगे चलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। तो डॉक्टर भाई गाड़ी आ गई, गाड़ी आती है बहुत यहाँ। Limiting friction. The maximum value of static friction that can come into play. The maximum value of static friction that can come into play is called limiting friction. Limiting friction को बोलते हैं जी FMS, maximum value static friction. Static friction को बोलते हैं जी FS. एग्जाम्पल देता हूं आपको। हमारे पास जो डेटा होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का होता है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। स्टैटिक नो, स्टैटिक तो जनाब जितनी फोर्स अप्लाई की उतनी होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये कुछ सिर्फ एक हद तक होता है। एग्जाम्पल, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। सपोज यू आर गिवन टू सर्फेसेस, you are given the limiting friction between these two, वो भी बताऊंगा भी किस चीज पे डिपेंड करेंगे। you are given the limiting friction between two surfaces 20 न्यूटन्स, याद रहे 20 न्यूटन्स, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि इतनी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पैदा हो सकती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ limiting friction. Now, I hope you can see me. I have a chair with a lever. It can go up and down. See? Okay. Okay? Now, the limiting friction is 20 newtons. You apply a force of, इसका मतलब है to move a body। अच्छा, एक और बात है, to move a body you must apply a force which is greater than at the most equal to limiting friction. This means that to move a body over a surface we must apply a force be greater than at the most equal to FMS। बच्चे कहते हैं सर अगर उसके बराबर करेंगे थोड़ी सी ज्यादा, कम से कम कितने चाहिए? 20 न्यूटन, यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा। चलो, anyway, I'm sitting again. Limiting friction is given to you as 20 newtons. You know what does this mean? This means that to slide the body on a surface between two surfaces whose limiting friction is 20 newtons, you must apply a force at least equal to 20 newton or slightly greater than that, greater than at the most equal to 20 newtons. Let me ask you, if I apply a force of 5 newtons, the limiting friction is 20 newtons, I apply a force of 5 newtons, how much friction will come into play? 4 choices देता हूं, 5 न्यूटन, 20 न्यूटन, 15 न्यूटन के 25 न्यूटन। The answer is obviously 5 newtons. Static friction, limiting friction कितने? 20 रहेगी। आपने फोर्स अप्लाई की 12 न्यूटन्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितने?
20, static कितनी 12. If the applied force, रट्टा नहीं लगाना, सोचो इस बात को. If the applied force is less than the limiting friction, then the body will not move, and a force equal to the applied force will come into play. That is called static friction. Bye bye. नहीं bye bye. Cheer को bye bye बोलता है. It's a very interesting discussion. We'll just take some time to absorb it. पर जो हो जाएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आसान है. Limiting friction is 30 newtons, let's say. You apply a force of 25 newtons. Will the body move? No. Static friction कितनी पैदा हुई? 25 newtons. I hope it is clear. The more we do, the more we learn. Kinetic friction क्या होती है? Kinetic friction or sliding friction. The opposing force of friction that comes into play whenever one body is actually sliding over another. इसको बोलते हैं, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है F के पैर में छोटा k. जब एक्चुअली बॉडी स्लाइड कर रही है तो भी पॉजिटिव, ऑब्वियसली तो नहीं, आपको बता रहा हूं कि फॉर अ बॉडी टू मूव, इफ द लिमिटेड फ्रिक्शन इज 20 न्यूटन्स एंड वंस द बॉडी बिगिंस टू मूव, तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी सी कम हो जाती है, से 18 न्यूटन, 19 न्यूटन, 20 भी मान के चल सकते हैं, पर एक्चुअली थोड़ी सी कम हो जाती है. द काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन बिकॉज इट इज इजियर टू कीप अ बॉडी मूविंग देन टू बिगिन मोशन. The force of kinetic friction is slightly less than the force of limiting friction. क्यों? Because it is always easier to keep a body moving rather than to initiate or start motion. ठीक है जी, ये सारी लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बड़ी अच्छी तरह समझ लेना. क्वेश्चन डालेंगे तो पूछेंगे वैसे ना. एक सपोज करो अपने पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स, ठीक है. P is applied force, F is force of friction. आपने फोर्स अप्लाई नहीं की
फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है ही नहीं। लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो एक डेटा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इज अ डेटा, वो फिक्स्ड है। वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, दिखा के जाऊंगा आपको आज। सपोज करो लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन है, आपने फोर्स अप्लाई की 5 न्यूटन, बॉडी नहीं चली, फ्रिक्शन फोर्स कितनी पैदा हुई 5। कब तक चलेगा ये, जस्ट 19.99999 तक, बीसी बोल लो। एक ग्राफ सीधा गया। जितनी अप्लाइड फोर्स है बिल्कुल उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स। ओ ए, तो ओ ए क्या है जी, ये स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करती है। Now once the body is set into motion, तो फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज नहीं करती, चाहे अप्लाइड फोर्स जितनी मर्जी बढ़ा लो। हैरान ना हो, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस। एक लिमिटिंग फ्रिक्शन का डेटा है जो दोनों सर्फेसेस पे डिपेंड करता है। उसके बाद अप्लाइड फोर्स ज्यादा करोगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगी। सो ये थोड़ा सा ऐसे, और फिर अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेगी और फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज नहीं होनी। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स है ये वाली, वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये एफएमएस है और ये एफके है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। दिस AB means that the body is just coming out of the irregularities. AB indicates that the body is just coming out of the irregularities. That is the cause of friction, the interlocking between the irregularities. बताता हूं। BC क्या है? BC represents kinetic friction. उदाहरण कुछ मैं आपको लिखा चुका हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, कितनी, जितनी अप्लाइड फोर्स हो, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम। वंस यू अप्लाई फोर्स इक्वल टू और ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, द बॉडी विल बिगिन टू मूव। अप्लाइड फोर्स आपने की 25 न्यूटन्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन है 20 न्यूटन्स, नेट फोर्स कितनी होगी 25 माइनस 20। फिर फॉर अ मोमेंट वी टेक काइनेटिक एंड लिमिटिंग टू बी द सेम। कितना फर्क है, आप भी न्यूमेरिकल्स में सेम ही लोगे अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड। आपने फोर्स अप्लाई कर दी 30 न्यूटन, तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी 30 माइनस 20। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं बढ़ सकती फ्रिक्शन फोर्स। नाउ cause of friction, ये टर्म्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, it is the interlocking of the irregularities between the two surfaces. It is the interlocking of the irregularities between the two surfaces which opposes
the relative motion between two surfaces and is the cause of friction. It is like this. ये इंटरलॉकिंग है. फोर्स अप्लाई किया आपने तो ये जो इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस है ये निकल जाते हैं एंड वंस द बॉडी इज इन मोशन द इंटरलॉकिंग इज ऑब्वियसली लेसर. वो कंटिन्यूसली बनने की कोशिश करी जाती है, निकली जाती है, बनने की कोशिश करी जाती है, निकली जाती है, अच्छी तरह इंटरलॉकिंग होती हुई नहीं. वंस द बॉडी begins to move over the surface, the interlocking is lesser than, रट्टा नहीं लगा रहा बेटे, समझना, is lesser than the case when the body is at rest. That is why force of kinetic friction is less than the force of limiting friction. Theoretical portion मैंने काफी करा देना ये 2 दिन में आपको. Let me write the law of limiting friction. Laws of limiting friction. पहली बात, the limiting friction between the two surfaces is directly proportional to the normal reaction. Is directly proportional to the normal reaction. देखो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. This is the example that I am taking today and the one एक मेरा हाथ. What do you think? Assume the hand to be uniform. Okay, I'll just consider it. ये हाथी की फिजिक्स की किताब है और ये लेक्चर में लगाना है. कुछ लिमिटिंग फ्रिक्शन है. Limiting friction means the minimum force that you must apply or slightly greater than that for the body to move. Limiting friction, case 1, case 2 and case 3 बिल्कुल टिप पे पड़ा. कौन से केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है? क्या समझते हो? Start thinking, boys and girls. यहां होते तो बड़ा मजा आता. कौन से केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा? सवाल का मतलब ये हुआ कि in which case you will have to apply a greater or a lesser force just to begin motion. 1, 2 और 3. पहले ऐसा था. 1, 2, 3 or 4. You will have to believe me that in all the 4 cases the force of limiting friction is the same. Is the same. है? हैरान हो गए? अविश्वसनीय? अविश्वसनीय? नहीं. करके देख लो. करके देख लो. Various experiments were done and that is why it has now become a law. सोच के देखो, नॉर्मल रिएक्शन तो सेम है ना.
नॉर्मल रिएक्शन कितना है? m इंटू जी। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? वेट mg, रिएक्शन r इक्वल टू mg। अब कितना है? अब भी mg। अब कितना है? अब भी mg। अब कितना है? अब भी mg। Normal reaction. So the force of limiting friction is directly proportional to the normal reaction. FMS is directly proportional to the normal reaction. FMS is equal to mu s into R. And mu s is equal to FMS over R is called the coefficient of static friction. एक ही लॉ है बेसिकली, बाकी ऐसे ही बनाए हुए हैं। दूसरी बात, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is independent of the area of contact. Is independent of the area of contact. Right? साइकिल है आपके पास, ब्रेक लगाते हो, फ्रिक्शन से रुकता है ना। अगर नॉर्मल रिएक्शन उतना ही है, चाहे ब्रेक इतनी लंबी हो चाहे इतनी छोटी हो, नॉर्मल रिएक्शन अगर उतना ही है तो फ्रिक्शन फोर्स सेम रहेगी। इंटरेस्टिंग ना? छोटे छोटे सवाल इंटरेस्टिंग होते हैं। ये भी आना चाहिए, ये पहले आना चाहिए। द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तीसरी बात, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन depends on the nature of two surfaces in contact. क्या मतलब हुआ इस बात का? जनाब, ये सरफेस है, एक किताब है, रिएक्शन तो कुछ रिएक्शन है, यू नीड सम फोर्स टू स्टार्ट इट्स मोशन। अब मेरा हाथ ले लो, ये सरफेस है, मेरा हाथ है, नॉर्मल रिएक्शन उतना ही है, बट द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिफरेंट। यू रिक्वायर अ डिफरेंट फोर्स टू स्टार्ट मोशन। दिस इज वेयर दिस म्यू एस विल कम इन। इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका किसी भी सरफेस के साथ उतना ही होगा, पर लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग अलग होगी। कैसे पता? बिकॉज अ डिफरेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू start motion of the same object on two different surfaces. चौथी बात, it also depends on the state of polish. एक टेबल, एक किताब पढ़ी है, वही टेबल कुछ सालों बाद, कुछ या एक टेबल है, एक पोर्शन उसका स्मूथ है, एक पोर्शन उसका रफ है। जो स्मूथ पोर्शन है उस पे फोर्स लगानी जो है वो कम लगानी पड़ेगी, रफ पोर्शन पे ज्यादा लगानी पड़ेगी। दिस मीन्स कि जो स्मूथ पोर्शन है, रिएक्शन दोनों केसेस में बराबर है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों सरफेसेस का अलग अलग है, एंड दैट इज व्हाई एफएमएस अलग अलग होता है। जो म्यू एस है, इट हैज नो यूनिट्स, नो डायमेंशंस, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन न्यूटन, रिएक्शन न्यूटन, दोनों फोर्सेस हैं। नो यूनिट्स, नो यूनिट्स। पेपर में सवाल आता है छोटा सा, नो डायमेंशंस। अब मैं आता हूं लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पे। बस लास्ट टॉपिक पर पढ़ेगी। सारा काम मेरे को शाम तक, आज या कल सुबह तक, बिफोर माय लेक्चर, बच्चों का आ जाना चाहिए।
laws of kinetic friction. लेक्चर एक बारी नोट करके उसको अपने नोट्स को खुद को पढ़ते हैं तो तैयार हो. लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. The force of kinetic friction is directly proportional to the normal reaction. बिल्कुल ठीक बात है. Fk is proportional to R. Fk is equal to mu k into R. जब बॉडी चल रही है किसी सरफेस पे, वही सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन तो उतना ही है mg, पर फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाती है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. इट इज इजियर टू कीप अ बॉडी मूविंग रादर देन टू स्टार्ट इट्स मोशन. वो बेसिकली म्यू के कम हो जाता है और म्यू के इज इक्वल टू एफ के ओवर आर, वेयर म्यू के इज द कोएफिशिएंट of kinetic friction. No units, no dimensions. Right? Rest all laws are same. Independent of the area of contact, depends upon the state of polish and the nature of the two surfaces in contact. As Fk is less than Fms, therefore mu k is less than mu s. Mu s ही होता है static friction. Boys and girls, I've delivered what a lengthy lecture today. आसान था, लिख लेना एक बार अपने हाथ से. It is good for your reference. Shabba khair, enjoy yourself. Happy Janmashtami. The sense of Janmashtami is basically freedom from the ego. That is what we meant when he said that all the doors were opened, all the shackles were opened. That is the real essence of Janmashtami. That you should be free the moment Krishna is born. The moment Krishna is born, it means that you have become aware. Awareness has landed into you, and the opening of the shackles and the chains basically means that you are free from ego, any kind of jealousy, and its free movement outside simply means that you are not considering caste, you're not considering creed, and you've begun to treat all people equally. That is the real essence of Krishna. Happy Janmashtami. Bye bye.